हेलो। डीएवी महाविद्यालय के रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग द्वारा एवं ICSSR द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी के द्वितीय तकनीकी सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आग्रह करता हूं उन शिक्षक बंधुओं से जो हॉल के बाहर हैं, कृपया करके वो हॉल में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। दूसरा तकनीकी सत्र शुरू हो चुका है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच सृजन की प्रक्रिया में मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर NP तिवारी सर से कि वो हमारे इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर RK द्विवेदी जी को मंच पर आसीन कराएं। मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर विशाल कुमार श्रीवास्तव जी से कि वो इस सत्र के मुख्य वक्ता डॉक्टर विश्व कल्याण दास जी को मंचासीन कराएं। मंच सृजन की इसी कड़ी में मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर अनिल सिंह जी से कि वो हमारे इस सत्र के वक्ता इंजीनियर हर्ष तोमर जी को मंचासीन कराएं। इस संगोष्ठी के द्वितीय तकनीकी सत्र में आप सभी मंचासीन अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। स्वागत के इस क्रम में मैं अनुरोध करता हूं कैप्टन डॉक्टर सुनीत अवस्थी जी से कि वो मंच पर आकर हमारे इस सत्र के अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर RK द्विवेदी जी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। Professor Dwivedi has completed his PhD from IIT Kanpur. Before starting his journey as an academician, he has served as a research engineer in the IIT itself. He has served as a lecturer in Christchurch College. He was also head of the Department of Physics department. He has worked as a resource person, organized in the seminars and the courses organized by Indian National Science Academies. Besides that, he was also the chairman of New Education Policy Steering Committee, and he is life member of several professional bodies. Some of the notable are Indian Physics Association, Electronic Microscopy Society of India, and Indian Thinker Society. I again welcome you, sir, on the dais. Thank you. अब मैं आग्रह करता हूं इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर समर बहादुर सिंह जी से कि वे मंच पर आकर हमारे इस सत्र के मुख्य वक्ता डॉक्टर विश्व कल्याण दास जी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। Dr. Vish Kalyan Das is a senior faculty in the National Forensic Science University. He has completed his PhD from West Bengal National University of Judicial Sciences. He has his expertise in the cyber security. Now I would like to request Dr. Gyan Prakash Gupta to please come on the dais and present memento to
Dr. Vishu Kalyan Das ji. Now I would like to request Dr. Vishal Srivastava to please come on the stage and present bouquet to Engineer Harsh Tomar. I would invite Dr. Anil Kumar Singh on the dais to present a memento to Engineer Harsh Kumar Singh. Engineer Harsh Kumar Singh is working with Infosys Bangalore, and he is handling a very interesting domain, that is in the direct taxes and customs. And his main area of expertise is big data, cyber security, and he also works on a very challenging problem of phase news detection. So we welcome Mr. Engineer Harsh Tomar again on the dais. Now the theme of the second session is existing and potential threat of India's cybersecurity. The other sub-theme is the future of cyber and information technology in India. Now I would request Professor R.K. Dwivedi ji to say a few words and conduct this session, please. A very good afternoon to one and all present in the national seminar on Indian cyber security, challenge and adoption. We now begin the second technical session. And as has been told, the theme of the second technical session is existing and potential threats to India's cyber security, the future of cyber and information technology in India. So in this second technical session, we have two speakers on the dais. I will call them as they will deliver their short lecture, followed by there are four more lectures of 5 minutes each. So that is all about the second technical session. So before I invite the first speaker of the session, that is Dr. Biswa Kalyan Ghosh from National Forensic Science University, Gandhinagar, Gujarat. I think let me briefly introduce him. He did his PhD from West Bengal National University of Juridical Sciences, Calcutta, then LLM Human Rights from National Law School of India, University, Bangalore, BA LLB Honors from Utkal University, Odisha. He holds expertise in the field of cyber laws and cyber forensics, environmental laws and governance. He has been teaching more than 8 years. He has a vast experience in cyber forensics and cyber law. That is basically the theme of the topic today. So without wasting time, because we are already late by 15 minutes, I invite him to deliver his lecture. The time given to him will be 20 minutes, followed by 5 minutes and another 5-minute discussion from the audience. Thank you so much, sir. A very good afternoon to one and all present here. Honorable Justice B.N. Sri Krishna, sir, distinguished guest, Honorable Chair, and my co-speaker. So I'll just start my presentation with a note which I had yesterday with Justice Sri Krishna. In 2019, Sir had inaugurated one Center for Artificial Intelligence and Law at my previous employment. And Sir asked me yesterday curiously, what is the fate of it? What is happening out there? I said, the place has changed, but not the people, because I'm still there, but I'm not with the institute that Sir was talking about. But we are still doing some good amount of work, which I would be presenting today. And Sir, I rest you assured that your baby that you have inaugurated that day is in the safe hands. And talking about the topic today, that is the future of cyber information, the whole presentation would be summarized or sum up to just 3 pictures. Okay, the pictures says volume. Just like we communicate, we interact with each other, we get to know.
we just have devised the cyberspace or the ICT that Wardley sir was talking about to interact, to communicate. And when we are talking about this medium of communication, we are coming up with a lot of potential nuances along with it. We have been talking about data, we have been talking about data protection, we have been talking about the laws. But let me tell you one thing, that we are talking about the data protection at the present time, but we never did that 20 years back. We never did that 50 years back. We were all human beings in a civilized society, but we never thought of data or data protection or its attribution to a person. Why? I believe all of us must have sent a postcard sometime or the other. We just handed over the contents of the postcard. We used to write our emotions in it. We used to hand it over to the post office. Have we ever thought whether the postmaster or the post peon or the clerk have ever read what is being written out there? Good things, bad things, or all things must have been written there. Or those people who wanted it to be secretive, they would be going for an envelope, not a postcard, on an inland letter. Those were the days which has given us the evolution, that we have gone through that stage, but now we have reached to a point when we are talking about, yes, there are certain things which are intrinsic. Those are certain things which are personal. There are certain things which need to be only attributed to the person who is writing or who is communicating. That means if I'm saying something to you, it's only me and you must know about it. At the same time, we have evolved in the communication mechanism, just like evolution, Darwin's philosophy of evolution that we talk about. We have come from a place where we were crawling to now crumbling the keypad and the keyboards. We are playing with the keyboards, but this is creating a volume of data that we are of concern right now. And that's why I have divided the agenda into 4 limbs, and these 4 limbs will be my point of discussion. The first is, how disruptive is technology that we are using? Can we tame this menace? Because at present point in time, when we are talking about larger growth in the technological order, we are not competing with the technology. Human being is not competing with technology. Technology itself is competing with itself. I'm sure Engineer Harsh would be seconding my statement that today, whatever the technology that we have, the next moment the technology is gone. A new version of the technology has come up. So the technology is the only competitor of its own self, but it is dependent. How are we managing it? Are we competent enough to manage it? Are we equipped enough to control it? And do we at all need to control this menace of disruptive technologies that we're talking about? The second aspect would be technological and legal issues and what would be its future. I'm sure we all do know and familiar with this space, but why am I projecting this space and the contents thereof? It's the same thing that we cannot do away our future without having technology. Akshan Pandey sir in the morning was talking about, if you want to be protected and if you want to protect your privacy, leave technology, live like a saint. But can we forecast or can we project a future of the same? And if at all we have to live with the technology, then what are the way outs that we need to be concerned about? And that is what the theme of the presentation today, the future of cyber and information technology in India. Now, if you see, there is some points been written out there that we are moving ahead with Industry 4.0. Then what is this 1, 2, and 3 industrial revolutions that we are talking about? The steam mechanism, the electricity generation, to the computer-based application, to the artificial intelligence, machine learning, and all these domains, the 4th generation that we are talking about. We have crossed these barriers, 1, 2, 3. Anything new that comes up to us, we never accept it with whole heart. Similarly, people do say that when bank nationalization happened, when computer-based mechanism came up to bank, people are apprehensive that we will be losing our jobs. People are apprehensive that there won't be any jobs for us, but we sustain through that transition. But do we need to adapt this transition, or do we need to regulate this transition with certain structure of technology plus law is the concern that we have to answer. Now, when we talk about the 4th industrial revolution, which is happening, which we cannot do away with, then how do we regulate it? What are the factors that we need to see forward to? These are some of the areas.
first of all, if you want to control something, we need to know what it is. Unless and until we know that this is called the virus, then how do we plan for an antivirus or an antidote? Similarly, what happened with corona? We had to first identify it and then find a solution to it. That every problem has a solution because human brain is definitely filled with enough gray matters to find a solution for every problem that we have. May not be today, but maybe tomorrow, but there would be a solution. Now that is where we are talking about which are these elements that Industry 4.0 is going to touch upon. It's definitely going to be a multiple facets. You talk about health, you talk about defense, you talk about banking systems, you talk about critical infrastructures, which Varghese sir was also highlighting. You talk about any systems that is being regulated by the cyberspace. Then what does this cyberspace mean? Anything which is having a connection with computer, computer system, computer network. If this is a mechanism that we are classifying that the Industry 4.0 is going to be touching upon, then we need to be preemptively prepared for those menaces which we may or may not foresee at the present point in time. And the moment I am saying that we need to be preemptively prepared, it is nothing but cybersecurity. If we are forecasting that certain things can happen, how do we defend it? I'll give you a small example. Few days back, I have a student of mine who just passed out from her master's, and she did a dissertation on drone laws. Now, what is a drone? Can this be a factor of Industry 4.0? Because a drone is being controlled through a virtual means by a third party, which is flying as an unmanned aircraft. I asked her a simple question. What do you mean by a drone? Can a drone be self-reliant? Can a drone be intelligent? Can a drone have its own cognitive capacity? Can a drone fly of its own? And where does the drone is being used? She said, sir, commercial activities, personal recreation, surveillance, and defense purposes. It's being used. I said, what is the definition? She said, sir, there is no definition of a drone. It's just a drone regulation in India, which says that drones are nothing but unmanned aircraft. And where does unmanned aircraft being used? Unmanned aircraft being used under the Civil Aviation Ministry, under the aircraft regulations. Now the problem is this what we are talking about? The defense sector, they are also firing UAVs, unmanned aircraft aerial vehicles, to target, shoot the missiles. Would that come under the definition of a drone? If it is not, somebody else is regulating it through cyberspace, then what would be its regulation? There is nothing in India right now. And it is being managed by Director General of Civil Aviation. Is this a matter of civil aviation? There is the constitutional question. Does Civil Aviation Ministry or Civil DGCA have any power to control the drones? There comes the delegated legislative framework into question. So these are constitutional questions which will definitely come sometime or the other. These are constitutional questions, but what are the legal questions when we come to 4.0? That we are dealing with a time, or we are sailing through a time when we are talking about machines recognizing voices, intelligent assistance, image recognition, or automation, robots, and neural process integrations all together. I'll just give you some practical examples. I just have come up to 5 minutes, so I have 15 minutes. I'll give you examples. I come from a National Forensic Science University in Gandhinagar. In Gandhinagar, they have founded 10 forensic science laboratories. In the laboratories, what they do, whatever the forensic science laboratory of the state does, they are also doing the same thing. We are also doing the same thing. But we are a part of an institution. We are not recognized. We were not recognized earlier by the state to be an institution to provide forensic certification. But now, after an amendment to Section 293 of CRPC, we are getting that stature. Now, what happens? We have come up with devices which will be giving you can recognize the facial matrices, facial attributes, you can recognize the handwriting attributes, you can recognize the emotional attributes, which are 99.9% accuracy, which the court is accepting. Now, I'm saying why? Because if a person is involved in some crime or in some offenses, then we have mechanisms which are being developed through cybernetics,
which is now giving us answers, or which is helping the court to understand whether the person is involved in a crime or not. And that is 99.9% accurate, which the courts are accepting. That means they have an alternative mode to appreciate evidences, which Akshan Kumar Pandey sir was saying in the morning. They have alternative mode to accept the evidences. But that only happens when the crime has been committed. But cybersecurity is not talking about commission of a crime, but defending the mechanism so that the crime is not committed. We try to secure the means and the medium through which we sail through the cyberspace. Now, those defenses are a subject matter of our concern. Have we ever thought we are going through so many patches of land? Everywhere there is a CCTV camera. When they are capturing our image, for how many days do they keep it? You would say, sir, 15 days, 20 days, depending on their space capacity and all. But have you ever visited any websites which are providing you with global surveillance networks? I can sit here, I can click on the networks of USA, and I can see any of its cameras being live available to me. You all do one thing, you go to the Google and find out, have I been watched? Is a website. Have I been watched? And you just put your Gmail ID, which officially you use, and you will find it will show you after some time that how many times your data from your Gmail account have been taken by which are the platforms. That means whenever you enter any application, you give your Gmail for access. They say, give it or go, will not provide you. And you want to access the benefits of the services for which you give, but you always fail to understand what happens next. Because what happens next is a part and parcel of the mechanism which is behind, which we call as the architecture. If the mechanism behind only asks you for information and you give the information and you say, I have got the services, but in the back end, whether your services for which you have provided some information, it's been secured or been taken away, you never bother. But these are open source tools which provides you a mechanism to understand, okay, have my identity, information being compromised? I would bet with you 100% of the people sitting in this audience would find, yes, it has been compromised. And primarily two elements would come. One is BigBasket if you use, one is Ixigo if you use. Ixigo is the travel website through which you book your tickets and all. Now, these are mechanisms of the future. But why would somebody take my data? If my data is some personal or something sensitive, why would somebody take my personal data? My personal data would be taken only because when it has some value. Otherwise, somebody investing on Alexa and Siri and doing a huge amount of R&D, why would they bother? Now, this is when we talk about the new technologies which has been evolving cost too much. And this cost needs to be recovered at some point in time, because we are living in a globe, or we are living in a world where economy determines how we are going to live tomorrow. Economy determines how the law is to be tomorrow. And that is what determines your growth. And for growth and the economic distributive factors, we need to be careful of, and for which we need infrastructure and we do need law. Because without having the law, we cannot tame this humongous menace or the demon that we are projecting at. At the same time, when we are talking about the driverless vehicles, we are not accepting it, because in India, bullet trains are yet a dream. So forget about thinking of driverless vehicles, but maybe a reality in future. But are we equipped? Are we in a position to understand the nuances? These are some of the factors where it says the machine is becoming so intelligent that it can defeat the human mind. Kasparov, you can see, Watson, you can see. These are two machines which has defeated the best in the world. And if the best in the world has been defeated by the machines, then do we not necessarily need to control it? Because I'm not projecting that whether it would be overpowering human being, because as Wojcicki sir said, you cannot replace the human touch, and that is definitely imperative. And this is what we're talking about.
These are some of the informations and news that we are talking about, that these are projecting threats, threat to person, threat to economy, threat to personal self, threat to data, threat to multiple factors. But these threats can be neutralized if you are defending ourselves. Now, what are the factors of defense? Now, you would understand, recently, if you have purchased a mobile phone, there are new features in the mobile phones coming up. Earlier, if you want to book something or an application, they would be asking you for accessing your location, location on the Google Maps. Okay, but now they have added a feature that give access to location only when this application is being used. Now, why is it so? If a person is taking my data of my location, what they can prove? The state can prove your involvement in something. The companies can prove your essential emotions. A commercial entity can prove that what all are you requiring. So that is why we are very sensitive about where do we go, what do we eat, what is our preferences. It should not be Zomato giving me the preferences or Swiggy giving me the preferences. It's me who has to decide the fact. And for that, we need to be secure. How can we be secure? And that's when comes the preventive measures. The preventive measures can be of two ways: supervised and unsupervised. Now, supervised and unsupervised are projected factors of tomorrow. If I want, I would be giving it. Do I have the power to retrieve it? I was just giving the same example. Now we are coming up with laws, we are bringing amendments in law, which is now going to give you a right to withdraw your consents, withdraw your information which you have given to others. But that is going to slowly and slowly come tomorrow. But at the same time, how can we make the persons liable who are dealing with our personal data? We have laws that, like 69F, so I was talking about in the morning. We have 79, we have 85, we have a lot of factors in IT Act altogether. But at the same time, the strategies that we are talking about is his. That when we are talking about Digital India campaign, we are talking about Atmanirbhar Bharat, we are talking about Make in India campaign, we are digitizing the whole world, whole of India. We are spending so much of money in terms of infrastructural development, then those infrastructure must be having some value to the people. And those value can only be attributed when we are secured on the cyberspace. And those security can be of two types: self-control, legal control. Self-control is what we have been talking about since morning, that you have to be careful. But let me ask you a question. Whenever we buy any appliances, AC, TV, fridge, the company sends a person to your house for demonstration. They would say, what is the wise use of that appliance? Have you ever come across any person or a sales representative coming to your house when you buy a mobile phone or a laptop or any communication devices, coming to your home and saying, sir, use it like this way, but don't use it otherwise? And when these all parameters are lacking, then self-control is in a volatile situation. It's in a fickle world. But the second concept is, if you are not self-regulating it, then law would come to picture as an enforcer. And when this enforcing mechanism would come, then only you can devise a mechanism that, yes, the futuristic technologies are good or bad. The second aspect of futuristic technology that we're talking about is blockchain. Now, many of the states have already accepted blockchain, just like Telangana. They have accepted it on their land record management, which is a good thing. But it has also bad facets of it, because blockchain is being taken into cryptocurrencies, and crypto assets are being now questioned whether they are currency or they are assets. Because since morning we are also talking about assets, but the manufacturing of that asset is also happening by a process through which it goes through a cyberspace. Now that is when the legal issues come into place. We have proper legal framework. Now what does proper here means? I have purposefully made it so that we do introspect upon the existing legal system that we have. I'll just give you one point here. We say, the government of India says, no, cryptocurrencies are not legal tenders.
RBI says no, it's not legal tender. But at the same time, the finance minister says 30% tax on any income that you do on crypto assets. But these are not assets, these are digital assets. And B.N. Shri Krishna sir yesterday was talking about the old bill of that personal data protection is now being devised as digital data protection bill. Now, this DPDP of 2022, whether it is going to see the reality of tomorrow or not is a big question. Or because law always works circumventing the people, keeping people at the center, because law is nothing but a manifestation of the societal needs. That's what we study in jurisprudence in the first class of our law study. But now there are multiple factors which has come into that circle. It's not only people, it's also the state, it's also the policing agencies, it's also the e-commerce platform, it's also the financial corporations, it's also many facets. When all the constituent stakeholders comes into picture, law may not have the answer. It may have answers, but the answer is always an absolute one, which law would never have. And that's what privacy was talking about. I started, if you remember, with one. I'll wind it up, sir. I'll give you a dividend of 1 minute, sir. I will not take more time. I started with one picture, if you remember, and that picture was evolution. I'll end up with one picture as well, and that picture is the world we live in. The world we live in, and whether we should be careful about the world that we do want for the future. We live in a scenario like this, where we want ourselves to be protected. And the moment we say that we want ourselves to be protected, it's not only my person, my persona, my information, or anything that is attributable to me. But at the same time, when I talk about the application of law protecting the same, that's just the window. Sorry, the door. The door is only shielding me because the law is saying so. But at the same time, we have the windows, we have the loopholes, we have the surveillances, we have the structures. And that is when the state comes into picture. I understand that legal control is necessary, self-control is imperative, but at the same time, how do we devise a mechanism to do so is also a questionable fact for tomorrow. We definitely would not want to and who had given us that framework contemplating on, and that would be something of the future, and that's what futuristic world that we are projecting at. Thank you so much, and thank you for having me here. Thank you. So session is now open for 1 or 2 quick questions. Please. Any question from the audience? I'm sure the organizer gave you food and I gave you some food for thought. So there definitely has to be some question. देखिए डॉक्टर डैस ने जो अभी लेक्चर दिया है मुझे लगता है कि उनको 1 घंटे का समय होना चाहिए था. 20 minutes is too short for him. And if I sum up in 20 or 23 minutes, starting with the need of our, that is the data protection. And we cannot give away the industry 4.0, that is industrial revolution. We cannot give up the artificial intelligence, blockchain technology, that is basically the today's demand. तो इन सब के बीच में हमें साइबर सिक्योरिटी जानना बहुत ही जरूरी है. Without cyber security, we are nothing. And I think we have to organize more and more workshops and seminars to learn these topics like artificial intelligence, blockchain technology, and at the same time, the cyber threats that are ahead and they are waiting for us to learn. So thank you very much, Dr. Das, for sharing your great knowledge with all of us. Thank you very much. So now going ahead, we have the second speaker, Engineer Harsh Kumar, System Engineer from Infosys Limited, Bangalore. Before I invite him, let me briefly introduce him. He did his Bachelor of Technology in Computer Science Engineering from AKTU, Lucknow. Then Flora Dell School, okay, that is 10. Then he is working from April 22
in Infosys Limited. So I will invite him to deliver his lecture on cyber security. Dr. Harsh Kumar. गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? सब थके हुए मत रहो क्योंकि साइबर सिक्योरिटी कोई मामूली टॉपिक नहीं है। आज मैं थोड़ा हर रियलिटी बताने वाला हूँ आपको, और माफ करना अगर कुछ उल्टा सीधा निकल जाए मुंह से तो ठीक है। लेट्स बिगिन। साइबर सिक्योरिटी होता क्या है बेसिकली हम बात करें साइबर सिक्योरिटी की तो ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्निक्स है जो हम यूज करते हैं डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। बेसिकली बियॉन्ड दैट ये कुछ भी नहीं है, ये हमने टर्म्स बना रखे हैं साइबर सिक्योरिटी के। अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटीज के लिए, ये नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसमें बोला गया है कि हम जो डाटा को बचाते हैं अपना, एंड मेनली हम कितने एरियाज में काम करते हैं, तो ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, डिजास्टर सिक्योरिटी है एंड नेटवर्क सिक्योरिटी है। अब ये लास्ट वाली चीज में लिखा है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स the IT security spending is expected to reach around $170 billion. $170 billion on cyber security solutions by the year 2020. $170 billion, $170 billion solutions के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। हम आखिरकार कौन सा सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें $170 बिलियन लग रहे हैं? बेसिकली हो क्या रहा है, अब ये जो हमारे रिसेंट साइबर अटैक था, इसमें हमारे डाटा ब्रीच हुआ था, डिनाइलर ऑफ सर्विस था। इसमें बेसिकली हमारे सर्वर हैक किए गए थे और उसका डाटा आउटसाइड सेल किया गया था। बट आप यहाँ पे रिपोर्ट्स में देखेंगे, अरे ये ब्लर हो गया। हाँ, ये रिपोर्ट्स में देखेंगे तो रिपोर्ट्स में उन हॉस्पिटल्स वालों ने खुद निकाला है कि हमारी सर्विसेज डाउन हो गए 14 डेज के लिए, हम मैनुअली वर्क करेंगे। ऐसा क्यों होता है? उन्होंने हमारे सर्वर्स को डिनाइल ऑफ सर्विस कर दिया। मींस दैट कि हम कोई भी रिक्वेस्ट देते हैं अपने सर्वर को, अपॉइंटमेंट डालते हैं तो वो बंद हो जाता है और उसके बाद हम कोई भी अपना न्यू रजिस्टर वगैरह नहीं कर सकते। बट जो करोड़ ऑफ टन्स ऑफ डाटा है उधर, वो कहाँ पर जाएगा? उसको जो मिसयूज होएगा उसके लिए, और उसकी वजह से जो ये 14 डेज के लिए बंद हुआ है सर्वर, मेनली ये इसके लिए हमारे पैसे खर्च होते हैं इतने सारे $170 बिलियन। अराउंड हम बात करें डेली $10 बिलियन का खर्चा होता है। एंड नेक्स्ट अबाउट हम अटैक्स के बारे में बात करते हैं। अटैक्स होते कैसे कैसे हैं? फर्स्टली इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। एज आई एम इन एप्लीकेशन डेवलपर इन इन्फोसिस लिमिटेड, अगर मैं कोई भी अपना इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता हूँ तो उसकी वजह से साइबर अटैक हो सकते हैं। टेम्परिंग, मैं डाटा छेड़छाड़ करता हूँ तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस, ये एम्स वाला कि इसमें हम अपना अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पा रहे। स्पूपिंग, हमारा मिसयूज होता है डाटा का। एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज, हम अपने प्रिविलेज का मिसयूज करते हैं। एंड रेपुटेशन। बात करते हैं इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर की। इसमें कोई भी अंदर का आदमी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो चाहे इंडिविजुअल में हो,
वो अपना डाटा खुद डिस्क्लोज करता है। हम मेन बात करते हैं एज अ इंडिविजुअल, अगर मेरे को अपना डाटा डिस्क्लोज करना हो, हम ये बोलते हैं गूगल को सब पता है। अरे गूगल को आप ही तो बताते हो, कोई बाहर का आदमी आपके फोन में आके अलाउ अलाउ थोड़ी करता है कि कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करी, लोकेशन पे गए, अलाउ अलाउ कर दिया। मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ये आप अलाउ अलाउ क्यों करते हो? कह रही है पूछता रहता है बस। मैंने कहा पूछता रहता है, ये आप पढ़ो तो इसमें क्या बोलता है, आर यू वांट टू अलाउ दिस लोकेशन, यस। फिर बाद में बोलते हैं गूगल को सब पता है। अब एक और क्या होता है कि हम फोन पे बात करें, आज जोमेटो से ये मंगाना है, तभी तुरंत ऐड आ जाता है कि जोमेटो से ये मंगाओ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन खुद पब्लिक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हम अपने रिलेटिव्स के बारे में भी बता देते हैं, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई मदर, सब बताते हैं। फिर उनके साथ कुछ हो जाता है बाद में, तो वो बोलते हैं ऐसा क्यों हो गया। बेसिकली हम अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं अनवांटेडली। अब ऐसा तो है नहीं कि हम अपने आप को दूर रख ले इन चीजों से, नहीं हो सकता। एक डाटा प्रिवेसी की बात होती है, डाटा प्रिवेसी मिथ है एक, कोई भी डाटा अपना प्राइवेट कर ही नहीं सकता। जैसे मान लो आपको इधर उधर भी जाना है तो आप गूगल मैप का भी यूज करते हो, आप खुद ही लोकेशन दे रहे हो, आप वो लोगों से भी नहीं पूछोगे, आप गूगल पे ज्यादा ट्रस्ट करोगे। वो दे दिया आपने डाटा, अब फिर बोलते हो गूगल को पता है। अब नेक्स्ट चीज टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या होता है, आज अपना डाटा गलत देना, मिसयूज करना डाटा का। अब छोटे से बच्चे को भी पता है कि फेसबुक पे नकली अकाउंट बनाने होते हैं, वो अपना डाटा छुपाता है अपने माइंड से कि दूसरे फ्रेंड को पता ना चल जाए कि मैं उससे बात कर रहा हूँ। वो अपना डाटा क्यों छुपाता है? वो इस वजह से ही तो छुपाता है, वो हमारे से ज्यादा समझदार है कि किसी को पता ना चले मैं कौन हूँ। तो बेसिकली ये हैकिंग वगैरह भी, ये सब चीजें ऐसे ही होती है कि अपना डाटा छुपाओ और किसी को पता ना चलने दो। साइबर अटैक्स में मेनली यही चीजें होती है, हम अपने आप को जितना एक्सपोज करेंगे सामने वाले को उतनी हेल्प होगी, वो हमें उतना ही अटैक करेगा। डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है, जैसे हमने कोई भी अपॉइंटमेंट बुक करना है, एम्स में बुक करने के लिए अपॉइंटमेंट, तो उन्होंने सर्वर हैक कर लिया हमारी। सर्वर हैक करने से क्या होगा, हमारी रिक्वेस्ट नहीं गई, रिक्वेस्ट नहीं गई तो उनका हमारा जो सर्वर में डाटा था वो चोरी हो गया। एंड स्पूपिंग, मिसयूज ऑफ डाटा, एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज। जैसे मैं इनकम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के लिए काम करता हूँ, मैं अपने प्रिविलेज का मिसयूज कर सकता हूँ। एंड रेपुटेशन। नेक्स्ट नहीं हुआ? हाँ, हमारी साइबर सिक्योरिटीज के ऑब्जेक्टिव्स एंड सर्विसेज क्या है? हमारे तीन मेन पिलर्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियली मतलब अपना डाटा जितना प्राइवेट हो सकता है, कॉन्फिडेंस हो सकता है, उतना करो, अनऑथराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी, इंटीग्रेटेड मीन्स दैट फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, जो डाटा लॉस हो जाए, बेसिकली सर्वर से डाटा चला जाए, तो वो चीज के लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। एंड अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी मीन्स दैट कि टाइमली एंड रिलायबल एक्सेस होना चाहिए हमारे डाटा का। These are the common terms which are related in cyber security space: honors, assets, countermeasures, vulnerabilities, threats, threats agents. ऑनर्स क्या करता है, अपने एसेट्स को संभाल के रखता है। एसेट्स में जैसे इन्होंने बताया, डिजिटल करेंसी भी होती है, क्रिप्टोज भी होता है, बट हम उसको है ना मेनली अपना सिक्योर नहीं कर सकते। बेसिकली क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज की, क्रिप्टो करेंसीज में सरकार ने टैक्स तो लगा दिया पर उनको डिजिटलाइज नहीं किया, क्योंकि उनको पैसे भी कमाने हैं और लोगों को बताना नहीं कि हम क्यों पैसे क्यों कमा रहे हैं, कि डिजिटल करेंसी क्यों नहीं कर रहे हैं इनको। सेकेंडली, ताकि सेकेंडली काउंटर मेजर्स, काउंटर मेजर्स में क्या होता है, ओनर्स अपने आप को इम्पोज करता है रिड्यूस को रिस्क करने के लिए। एंड वल्नरेबिलिटीज क्रिएट होती है अगर जब काउंटर मेजर्स कम होते हैं। आफ्टर दैट थ्रेट एजेंट, थ्रेट वगैरह जो हम हमारा डाटा मिसयूज करते हैं। अब कॉमन मिथ की बात करते हैं जो साइबर सिक्योरिटी में होता है। लोगों को लगता है कि डिजिटल एंड द फिजिकल सिक्योरिटी सेपरेट है। हमारे डॉक्यूमेंट जो भी हाउस प्रॉपर्टीज होते हैं, जो हम पेपर वर्क होते हैं, वो भी सिक्योर है, बट जो हम इंटरनेट पे देते हैं वो सिक्योर नहीं है। बट ऐसा एग्जैक्टली अपोजिट होता है। हम एक वॉच भी खरीदते हैं, स्मार्ट वॉच में हम स्मार्ट वॉच तो खरीद रहे हैं, पर हम खुद पागल बन रहे हैं। स्मार्ट वॉच में क्या होता है, हमारे सब बॉडी टेम्परेचर वगैरह, हाई बीपी वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, और उससे क्या होता है, हमारा डाटा इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है। फिर इंश्योरेंस कंपनी बोलती है सर आपको ये इंश्योरेंस लेना है, आपका हाई बीपी है, आप जल्दी टपक जाओगे।
ले लो। तो ऐसे ऐसे कर करके वो लालच में डालते हैं कि साल भर का इतने में हो जाएगा, इंश्योरेंस ले लो जल्दी, ऐसा होता है। तो मेनली हम इन चीज़ों से बचना है। एंड साइबर सिक्योरिटी इज जस्ट एन आईटी इशू। ये तो बहुत बड़ा मिथ है कि आईटी इशू है ही नहीं। डाटा डिजिटलाइज हो गया तो इसका मतलब थोड़ी है कि ये आईटी वाले ही देखेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। आपका आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना कम डाटा मिसयूज, जितना कम डाटा अपने आप स्प्रेड किया जाए उससे कम करो। प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ इज गुड इनफ। अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही वो नहीं है। बेसिकली क्या होता है, आज की डेट में बच्चा इजीली एक्सेस कर पा रहा है इंटरनेट को, बट ये हम इंडिया में सबसे ज्यादा कमी इस बात की है कि हम वेल एजुकेटेड नहीं है, अवेयरनेस नहीं है साइबर सिक्योरिटी के बारे में। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि आजकल 2 साल के बच्चे को आप चलना नहीं आता, यूट्यूब चलाना आ जाता है उसको। क्यों आता है? क्योंकि हम इजीली एक्सेसिबल कर पा रहे हैं सब चीजें। बट इजीली एक्सेसिबल का मतलब ये नहीं होता कि हम आसानी से एक्सेस करें, और डाटा डाटा हम खुद ही दे रहे हैं। एक अटैक आज नहीं होता, आज अटैक्स होने वाला सालों बाद होएगा। मतलब उस अटैक्स की आज से तैयारी नहीं चल रही, 1 साल से पहले तैयारी चल रही है। हमको पता नहीं है वो अटैक कब होने वाला है। गोइंग बैक टू पेपर मिनिमाइजेस रिस्क, मतलब कि पेपर वर्क करेंगे तो रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये करने पर तो पेपर ही पेपर इकट्ठे होंगे, हम डिजिटलाइजेशन के पीछे नहीं होंगे। एंड सेकंड थिंग दैट, अगर ये हम पीछे भी हो जाएंगे ह्यूमन टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंट में, हम बहुत पीछे चले जाएंगे, बिछड़ जाएंगे, अगर ये डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा इससे। यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज इनफ। Hackers found many multiple ways to intrude in antivirus software and hide their own attacks in the system। मतलब ये है कि आप एंटीवायरस यूज करके, फायरवॉल यूज करके अपने सिस्टम्स को नहीं बचा सकते, एंड अपना डाटा नहीं छुपा सकते अपने आप को अटैक होने से। ये टारगेट्स कौन कौन होता है? साइबर जो टारगेट्स होता है, ये साइबर टारगेट्स किस किस को हो जाता है? मेनली पर्सनल कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, critical infrastructure, computer networks, and personal computers. Critical infrastructure, vital assets of nation virtually and physically, controlled by supervisory control and the data acquisition. साइबर साइबर अटैक के इम्पैक्ट क्या होते हैं? फर्स्टली मेनली ऑर्गेनाइजेशन नेम हिट्स हाइलाइन, मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू कम हो जाएगी। एंड लॉस इन बिजनेस, लीगल पेनल्टीज, रेगुलर फंक्शनैलिटी क्रिप्ट and defamation. Majorly, we face so many cyber attacks in day by day, but most of the attacks we are not known. There are unknown attacks also. We are just transferring our data from one place to another place by just saving data into Google, and even we are using laptop mobiles. We are just हम उसके गुलाम हो चुके हैं, करते रहो जो होगा। एंड अबाउट दैट, आफ्टर दैट, अगर हम सेफ्टी की बात करें, अगर हमें सिक्योर करनी है सब चीज़ें, तो देर आर मेजर जिसको हम फॉलो कर सकते हैं स्टेप्स। फर्स्टली, अगर आपको इंडिविजुअली बचना है, इंडिविजुअली के लिए तो एक स्मार्टली हमें यूज करना पड़ेगा, स्मार्टली हमें डिवाइसेस को यूज करना पड़ेगा। अंधाधुन हम फॉलो नहीं कर सकते कि अलाउ एक्सेस कर दिया, कुछ भी कर दिया। एंड कहीं अनवांटेड जगह अपना फोन नंबर वगैरह भी नहीं दे सकते कि हमने चलो फोन नंबर लिख दिया, आपको क्यों चाहिए पूछना पड़ेगा। हमें फोन नंबर देते हैं तो किस लिए देते हैं? हम क्यों अपना डाटा बिना बात में किसी को पास कर रहे हैं? वो तो हमारा डाटा बेच के अपने पैसे कमा रहे हैं, बट हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम फायरवॉल्स वगैरह यूज कर सकते हैं, एंटीवायरस यूज कर सकते हैं, अपडेटेड अपना सिस्टम्स को रख सकते हैं, वीपीएन यूज कर सकते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के लिए। एंड फ्यूचर्स में हम ये नहीं कह सकते कि साइबर अटैक्स कम हो सकते हैं। साइबर अटैक्स का ये है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी होती जाएगी तो ये पीछे नहीं होएगा। साइबर अटैक्स में हमें ये भी नहीं पता होगा कि कौन सा अटैक्स कब हो सकता है। मेनली आजकल तो ये हो रहा है कि वॉर में वेपन्स रखे रखे रह जाएगी आपके न्यूक्लियर, और आज की डेटों में
यूएस हो, चाइना का कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर क्यों नहीं आती? क्यों हमें पता क्यों नहीं चलता कि चाइना में अंदर क्या हो रहा है, न्यूज वहाँ की न्यूज एजेंसी में क्या चलता रहता है? क्योंकि उनकी साइबर सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रांग है। वो अपना डाटा प्राइवेसी लीक होने नहीं देते। वो अपना उन्होंने एक इकोसिस्टम एनवायरनमेंट ऐसे ही बना रखा है कि हर चीज़ों पे, तभी वो इसलिए आगे। हम कुछ भी बोलो चाइना के बारे में, बट दे आर वेरी स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, एंड वी आर सो मच लैगिंग इन द वी आर हैविंग क्योंकि हम अपने बच्चों और जो हमारे पेरेंट्स वगैरह होते हैं उनको हम अब इन चीज़ों के बारे में नहीं बताते। बेसिकली क्या होता है, बच्चे को फोन का एक्सेस तो मिल जाता है जल्दी, इंटरनेट का, बट वो ये चीज़ें नहीं समझ पाता कि ये कितना पावरफुल वेपन उसके हाथ में। एंड पेरेंट्स को भी, जैसे मैंने अपनी मदर के बारे में बताया, मदर अलाउ अलाउ कर देती है। मैंने पूछा क्यों करते हो, तो बोल रहा है ऐसे ही मांगते हैं। तो ऐसे नहीं, उसमें अब स्मार्टली यूज होना चाहिए इंटरनेट का, क्योंकि इंटरनेट बहुत पावरफुल वेपन है। हम मिसयूज के बहुत जल्दी उसमें घेरे में भी आ सकते हैं, और आते भी है डेली डेली। जैसे हम स्मार्ट वॉच की बात करें, स्मार्ट वॉच हमारा डाटा पता नहीं किस किस कंपनियों को बेच रहा है। हाई बीपी, आपको हाई बीपी है, इंश्योरेंस ले लो, जल्दी मर जाओगे। नहीं, इतना सस्ते में मिल रहा है, 400 रुपये महीना है, साल का 12,000 होगा, ले लो और आपको इतना मिल जाएगा। अरे तुमको कैसे पता चला भाई मुझे हाई बीपी है? मुझे तो खुद ही नहीं पता, मेरी फैमिली को मैं बताता नहीं हूँ कि हाई बीपी है, बट स्मार्ट वॉच को पता है, और स्मार्ट वॉच के थ्रू पूरे वर्ल्ड को पता है कि आपको हाई बीपी है। ऐसे ही। एंड बात करें हमारे जो उसकी क्या बोलते हैं, मनी मनी जो हमारे पैसे डिस्क्लोज वगैरह होते हैं, जो पेमेंट सिस्टम हैकिंग होती है, पेमेंट सिस्टम को हम ओटीपी वगैरह, तो चलो नॉर्मल बात है कि ओटीपी नहीं बताना चाहिए, ऐसे सब बोलते हैं कि ओटीपी मत बताओ, बट आपने ये देखा है कि हम पेमेंट को किसी के भी थ्रू कर देते हैं, किसी को भी यूपीआई वगैरह कर देते हैं, ये तो सब रिकॉर्ड होता है। तो आप बोलते हो कि मेरे को कस्टमर केयर वगैरह कॉल आती। अरे भैया, कस्टमर केयर आप खुद ही तो कस्टमर कस्टमर कंपनी को बताते हो कि हम मैं अपना डाटा इधर भेज रहा हूँ, आप आके मुझे कांटेक्ट करो, लोन ले लो सर, आप इतनी ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से वहाँ करते हो, आपको लोन रिक्वायरमेंट है, आप ये स्कीम ले लो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमें मेनली नेशन का डेवलपमेंट भी अगर देखा जाए तो नेशन का डेवलपमेंट भी इन चीज़ों से ही होएगा कि अपने आप भी इंडिविजुअल ग्रोथ हो और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो। क्योंकि इंडिविजुअली तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, एंड ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा क्या होता है, अगर मेरे को डाटा चुराने वाली कंपनी भी बनना है तो मेरे को अपना डाटा भी सेफ रखना पड़ेगा। मैंने अगर आपसे डाटा चुराया तो मेरे को अपना आपका डाटा भी सेफली चुरा के रखना होगा एक जगह। तो मेनली दीज आर द environment we are struggling, and the harsh reality of our cyber security is we are so much lagging in that part. And आप जो भी कोई भी इंटरनेट पे एक्सेस करते हो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट्स को एक्सेस करो, विदाउट किसी पे ट्रस्ट मत करो। गूगल हम नहीं बनाया है, कोई चांद से तो आदमी आया नहीं था बना के गूगल दे दिया, ये लो गूगल बाबा है, इस पर अपना काम करो, सब हो जाएगा। एंड थैंक यू एवरीवन सुनने के लिए मेरे को। तो अगर ऑडियंस में किसी को कोई क्वेरी हो तो हर्ष जी से पूछ सकते हैं। वैसे हर्ष जी ने बहुत ही सरल भाषा में और चेतावनी भरे शब्दों में हम लोगों को एक मैसेज दिया है अपने लेक्चर में। उन्होंने सारी की सारी चीजें बहुत ही एक कहेंगे बिंदास तरीके से उन्होंने जो है अपना प्रेजेंटेशन दिया है, जो हमारे लिए काफी लाभदायक होगा। हर्ष जी को हम सब लोगों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लोग बोर हो रहे थे, मैंने सोचा थोड़ा इंटरनेट एंटरटेन करा जाए। बिल्कुल बिल्कुल जो है। थैंक यू थैंक यू। इसके बाद we have 4 more presentations. The first presentation is by Anjali Dikshit. Is she around? She will speak on cyber security, state surveillance, and the quintessential privacy concern.
पर दे सकते हैं, जिससे उसको ड्यू टाइम में अपलोड किया जा सके और जिससे डिले ना हो। सारिका श्रीवास्तव एंड अखिलेश मिश्रा। Sorry for the delay. A very good afternoon to our Honorable Chief Guest, Justice Sri Krishna, respected members of the dais, distinguished speakers, and all fellow participants. My name is Anjali Dixit, and I am University, Lucknow. The title of my paper is Cybersecurity, State Surveillance, and the Quintessence line of paper so that it delivers an idea. It studies the legal landscape of cybersecurity and state surveillance in India, analyzing the emerging privacy concerns in this regard, and advocating for a balanced and proportional risk management approach that respects privacy and protects personal information effectively. Now, before beginning, I would like to place a question here. Should enhanced cybersecurity come at the cost of privacy? In order to understand this, we must appreciate the relationship between cybersecurity and and privacy protection. Cybersecurity and privacy protection are generally interconnected, with privacy protection relying on effective cybersecurity measures. But here's the catch. This relationship is not entirely harmonious. Cybersecurity and privacy are often cast as adversaries for plausible reasons. Let's understand this from a recent example. On 20th of April 2022, the Indian Computer Emergency Response Team, commonly known as CERT, which is a body established under the Information Technology Act 2000, issued certain directions. There are 6 operative provisions of these directions, but I shall discuss only the ones which are relevant for us here. CERT can now seek real-time information from entities under the scope of its directions, such as service providers, intermediaries, data centers, etc., to prevent, preempt, or address cybersecurity incidents. Now, there is very little transparency on how exactly will CERT exercise this power. It can direct any entity to provide relevant information without a security incident occurring. Further, some entities such as VPNs, which are commonly known as virtual private networks, are required to register customers and subscribers and store their online activity for a period of 5 years. Now, these directives are actually in direct conflict with the purpose of VPNs. VPNs mask your IP address from the IP address of the users from internet service providers as well as third parties. Usually, usually journalists, human rights activists, and other activists who oppose state actions generally rely on VPNs for their work because they cannot be targeted by the government just for opposing their actions. Now, according to cybersecurity experts, such directions by CERT are actually an attempt at state-sponsored surveillance of cyberspace. Furthermore, the increase in personal data being collected of users without a data protection framework in place will risk the information of individual users if such data is breached. So, coming back to the original question, even if some people are ready to trade off their privacy for security, these government actions will unfortunately end up failing both. In India, state surveillance is lawful for enhancing cybersecurity, and several government departments entrusted with securing cyberspace often resort to surveillance measures. The state has broad discretions to resort to surveillance under expansive grounds, such as national security, maintaining public order, and public safety. Although these are genuine concerns for the state, there is not clearly, the terms that are used on the basis of which they can resort to surveillance measures are not clearly defined.
They lack detailed standard operating procedures, and they provide enough leeway to state officials to resort to surveillance measures at their discretion, sometimes even beyond the purpose of legislation. Additionally, state agencies perform in opacity without an independent oversight mechanism, which goes beyond their parent department. As we all know, the landmark judgment of retired Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India, the right to privacy, including informational privacy, was held to be a fundamental right. Any state action that violates these rights has to pass the test of proportionality, necessity, and legality. So this in effect means that whenever the state resorts to any surveillance measure that breaches our privacy, it must pass the test which was laid down by the honorable court. So I would like to conclude by saying that while cybersecurity initiatives may require some degree of monitoring of our data in order to be able to detect anomalies and protect cyber infrastructure and information, cybersecurity initiatives should not be used as an excuse for building mass surveillance regimes and for unregulated and unrestricted monitoring and analysis of personal information of individuals. In the end, I would like to conclude by a famous statement made by Canada's Privacy Commissioner, Interim Privacy Commissioner in the year 2011, which I think very well captures the essence of my paper. And I quote, that violating people's privacy in the interest of ensuring cybersecurity would defeat the very purpose of cybersecurity. Thank you all. Thank you very much, Anjali, for the nice presentation and completing also a presentation in time. Now I invite Sarika Srivastava. She will speak on India's cyber security issues, challenges and options. Sarika. Good evening to Honorable Judge, members, Principal Sir, Professors, research scholars, and my dear students. I, Sarika Srivastava, Research Scholar, Department of Political Science, CSJM University. In today's digital world, we have become digital citizen with the digital citizenship. हमारी सुबह होती है व्हाट्सएप पे मैसेज गुड मॉर्निंग भेजने से लगा के रात में व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट करने तक. साइबर सिक्योरिटी प्रेजेंट टाइम में 10 मिनट भी हमें इंटरनेट नहीं मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम पैरालाइज हो गए हैं. आज के टाइम पर इंटरनेट की वैल्यू पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा हो गई है एंड इवन आफ्टर द कोविड. So cyber security is the protection of internet connected devices like hardware, phones, laptops. It is not only phones but also like हमारी जो digital watches हैं. Sorry, first time बोल रही हूँ तो थोड़ा सा nervous, so please forgive me. So cyber security is not only used by individual but also by the companies, governments, and even every organization. Present time में cyber threats एक बहुत ज़्यादा major issue बन गया है. I can quote an example. मेरा personal life का एक example है. There was a relative of mine who is no more. Like he was near around 70 years of his age. तो आज से 5 से 6 साल पहले की बात है. उनको नहीं पता था कि उनको OTP आया एंड उन्होंने अपना OTP शेयर कर दिया. उनके अकाउंट से 25 से 30 हजार निकल गया. तो अभी भी still people are not that much aware, and it's not about elderly people, even the youngsters. Like present time में सबसे ज्यादा major issue है sextortion का. Young जो especially जो young मेल्स एंड फीमेल्स हैं उनको पता भी नहीं चलता. उनका इमेज, उनका डेटा मॉर्फ करके वेबसाइट पे डाल दिया जाता है और उनको आप किस तरीके से आप बताओगे, आपको शेम किया जाता है पब्लिकली. तो इतना ज्यादा प्रेजेंट टाइम में इस चीज को लेकर के लाइक देयर वाज एन रीसेंट इशू
बच्चे जो IIT से इवन पढ़े हुए हैं उनको भी लाइक लोग ब्लैकमेल कर लेते हैं। तो हमको लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं लेकिन हमें नॉलेज है, बट स्टिल वी आर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट कि हम इस चीज को पब्लिकली बोल पाए। As per 2021, India was among the India became the second highest number of data breaches in India. Like India is also among the top 5 countries in terms of cyber crimes across the world. Because India, like we have huge population and economically we are more profitable for the hackers. So due to like future perspective of the cyber security, as India is aspiring to become 1 trillion economy, strong cyber security synchronizing all the ICT system clock with government mandated clock and servers. Like in the very landmark judgment case of case Puttaswamy in 2017, right to privacy, there is right to be forgotten is the very intrinsic part of the right to privacy. Like people are not aware कि हमारा data अगर हमने गलती से किसी से भी share कर दिया है तो हम उसको एक बार erase भी कर सकते हैं। अभी उतनी people are aware, not aware। बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे कि साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, and there is also an act, Information Technology 2008 Act. Recently, there is a data protection bill which is not yet, it has become act. Now I'll come to the challenges. There are lack of technical infrastructure. In terms of technical infrastructure, we are not at par with the other European countries, even with the other, even with the America also. The biggest challenge is the digital mindset of the people. हमें लगता है कि हम normally भी अपना data जैसे कि आजकल डेटा, अगर मैं मैरिज प्रपोजल का भी डेटा है तो अपना इंडिविजुअल का डेटा के साथ साथ भी फैमिली डेटा भी शेयर हो जाता है। तो मेजर चैलेंजेस है कि अपना डेटा, इवन पिक्चर्स वगैरह भी सब आप कैसे डिलीट करोगे। तो वे फॉरवर्ड, अगर 10% ऑफ एवरी IT बजट इन द गवर्नमेंट एज रिकमेंडेड बाय NASSCOM साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स अगर किया जाए तो हम बहुत सारे हद तक उसको कम कर सकते हैं। एंड ऑल्सो बाय मास अवेयरनेस, लाइक देयर इज अ प्रोग्राम सिक्योरिटी एजुकेशन ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम। India is also not a signatory to Budapest cyber crime. So these are the challenges we are facing now. So I would like to conclude here, and sorry, I was being fumble. Sorry, everyone, and thank you so much. Thank you, Sarika. The next speaker is Akhilesh Mishra. अखिलेश मिश्रा का प्रेजेंटेशन होगा मानव जीवन में साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका। आदरणीय मंचासीन अतिथि तथा विराजमान लोग, विराजमान भी बहुत कम ही बचे हैं, तो हम आप सभी लोगों के सामने जो भी पेपर में लिखना था वो हमने लिख लिया है। बहुत सामान्य सा हम सारांश और निष्कर्ष देना चाहेंगे। साइबर सिक्योरिटी जो भी हमने भी पढ़ा पेपर सबमिट करने के लिए, और जो भी जानकारी है हमारी ह्यूमैनिटी के आधार पर, तो वो ये है कि प्रेजेंट टाइम में मोबाइल में पता नहीं कौन सा विटामिन है कि अगर 3-4 दिन मोबाइल में रिचार्ज ना हो किसी के तो आदमी की कमजोरी से महसूस होने लगती है, पीछे बात भी होती है। तो अगर हम ये कमजोरी की बात करें, ये सिर्फ मोबाइल की बात है, इसमें अगर हम ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में देखें तो भारत के अंदर कंप्यूटर, जैसा भी बताया भी गया कि पर्सनल कंप्यूटर तथा जो नेटवर्क हैं उन पर अटैक मोस्टली हो रहे हैं।
अगर हम एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक देखें कि 2014 से लेकर 2011 से लेकर 2014 के बीच 350% साइबर अटैक बढ़े हैं। भारत में अगर हम देखें तो ये 2022 का आंकड़ा जो हमें दिया गया सर्ट इन के द्वारा, तो वो है कि गूगल के द्वारा आंकड़ा दिया गया कि सिर्फ 2022 के चौथाई हिस्से में जो पीछे बीत चुका है उसमें 18 मिलियन मीन्स 18 लाख अटैक हुए हैं भारत पर केवल, कोई दुनिया की बात नहीं करते। भारत के अंदर ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि क्वालकॉम की रिपोर्ट हमें बताती है कि प्रेजेंट टाइम में आपने देखा होगा कोविड के बाद हम लोगों ने कॉन्टेक्टलेस जो है ट्रांजेक्शन भारी मात्रा में बढ़ाई है, और क्वालकॉम ये बताता है कि भारत के अंदर कोई भी बैंकिंग पेमेंट ऐप या ई वॉलेट सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की हार्डवेयर की ऐसी मतलब सुरक्षा नहीं दी गई कि उससे हमारा जो भी ट्रांजैक्शन है वो पूर्णतः सुरक्षित हो सके। दूसरा, अगर हम एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो 2014 में भारत में 9,622 अटैक हुए, 2015 में भारत में 11,317 अटैक हुए, 2016 में भारत पर 12,592 अटैक हुए, 2017 की बात करें तो इसमें 21,000 समथिंग अटैक है, 2018 में भी 27,000 समथिंग अटैक भारत पर हुए। सिर्फ भारत पर ही अटैक हो रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि जब हम मोबाइल खरीदते हैं या अपना कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें, चूंकि अभी बताया था हमारे काबिल इंजीनियर दोस्त ने कि उन्होंने बताया कि भारत में ज्यादातर लोग भूल रहे हैं, आप क्या बताया था, कुछ था कि ज्यादातर लोग जो है वो नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं फोटो डालने के लिए, हाँ फोटो डालने के लिए, जब अपनी इमेज और अपने डेटा डालते हैं। तो यही है कि हम कभी भी फोन खरीदने जाते हैं या कोई भी जाता है, यहाँ बैठे हैं खाली, तो ये भी अगर खरीदने जाते हैं तो ये भी जो है, या कोई भी, हमने देखा ज्यादातर लोगों के जो फोन है वो मेनली सेल्फी के बेसिस पे रहते हैं कि सेल्फी हमारी अच्छी आ रही है, कैमरा अच्छा है या नहीं है, बस इतना, इसके अलावा नहीं कोई। और अनपढ़ आदमी तो उसके सामने मजबूरी है कि उसको तो वीडियो देखना है ना, तो उसको तो फोन वैसा चाहिए, वो सिक्योरिटी बेसिस पे तो कोई फोन नहीं लिए जाते। गूगल की रिपोर्ट, सर्टिन की रिपोर्ट और क्वालकॉम की रिपोर्ट ये ओवरऑल ये बता रही है कि भारत में कुछ और नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना हो कि जैसा भी बजट की बात हुई, बजट बढ़ाना है, ये बढ़ाना वो बढ़ाना है, ये एक सेना के लिए, अभी शायद कल जनरल साहब आएंगे या नहीं आएंगे, कोई सेना का जानकार होगा तो उसको भी ये बात मालूम होगी कि सेना के हमारे प्रोफेसर भी जानते हैं कि सेना 4 हिस्सों पर लड़ रही है, एक स्थल भाग, एक जल भाग, एक वायु भाग, और चौथा है कि अंतरिक्ष में भी सेना को भारी मात्रा में डिफेंस की तरफ से सिक्योरिटी देनी पड़ रही है। और ये 5वां सेक्टर बढ़ के आ गया हमारे सामने, साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि सन 2019 में भारत में 3,94,499 साइबर अटैक हुए केवल भारत में, और अगर हम 2020 देखें तो 1,36,000 समथिंग हुए। क्यों हुए? क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर जो हमारे थे वो लॉकडाउन में झेल रहा था 2020, फिर 2021 में बढ़े, और 22 में तो जैसा भी आपने गूगल में रिपोर्ट देखी थी होगी, 2200 अटैक पर डे हो रहे हैं हमारे देश में साइबर, जो कि प्रायोजित है पाकिस्तान और चाइना से। पाकिस्तान तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान हमारे देश से नहीं ज्यादा कुछ, तो हम कहेंगे कि वहाँ की पार्लियामेंट जो है, वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो हमारे यहाँ की पार्लियामेंट ज्यादा एजुकेटेड लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। जैसा भी काबिल इंजीनियर दोस्त ने बताया कि जो हमारे यहाँ से अच्छी सिक्योरिटी चाइना दे रहा है, वहाँ की पार्लियामेंट्री रिपोर्ट या वहाँ की कोई भी रिपोर्ट इतना पब्लिकली नहीं हो पाती। दोनों साइबर अटैक्स, मोस्टली साइबर अटैक हमारे देश में पाकिस्तान और चाइना की तरफ से ही होते हैं। एक वानाक्राई रैनसमवेयर सन 2017 में 100 से अधिक देशों पर उसका अटैक हुआ। इसके तहत ये देखा गया कि उसमें हमारे यूरोपियन कंट्री, अमेरिका और रशिया पर अटैक किए गए थे। सबसे ज्यादा प्रभावित देश हमारा रशिया था। भारत दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रभावित था, जबकि भारत में उतना ज्यादा 2017 में हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर, जितने भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर हैं, उनमें उतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ। उसके बावजूद भी हम ज्यादा प्रभावित हुए, दूसरे नंबर पर प्रभावित हुए थे। क्यों हुए? उसके पीछे की वानाक्राई रैनसमवेयर जो है ज्यादातर अपना अटैक विंडोज 7
विंडो सर्वर 2008, विंडो एक्सपी, इन पर ज्यादा करता है, जबकि लाइनेक्स, मैक और विंडो 10 पर कम करता है। हमारे यहाँ की अगर हम सरकारी कार्यालयों में देखें, जहाँ की जरूरत है, डेटा हमारा चोरी हो जाए, हमारे फेसबुक से कुछ चोरी कर लो तो क्या चोरी कर लोगे भाई? हमारे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं कि तुम चोरी करके कहीं कुछ बना बिगाड़ लोगे। लेकिन अगर हमारे डिफेंस सेक्टर या 2019 में जो हमारे कुंडनकुलम अटैक परमाणु संयंत्र पर हुआ, अगर कोई हमारा परमाणु संयंत्र का डेटा एक्सेस करता है या हमारी मिसाइल्स को टैकल करता है, तो फिर समस्या हमारे सामने ज्यादा तगड़ी आ जाती। हमारा डेटा चोरी करना कर लो, हमारे पास कहा है, हमारे पास हमारा नाम है, पापा का नाम है, ये है वो है, ले लो। हमारा चोरी करके सिर्फ आप हमें प्रभावित करते। लेकिन अगर आप हमारे सरकारी कार्यालय का या किसी डिफेंस सेक्टर का, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि अगर हमारे देश का एक आदमी जाता है तो हमें कोई समस्या नहीं होती, हमने हजारों जवान दे दिए हैं। लेकिन अगर हमारे देश का कोई डेटा जाता है, हमारे देश की कोई भी सम्मान पे आंच आता है, तो एक समस्या हमारे सामने क्रिएट होती है। तो ये वानाक्राई रैंसमवेयर की बात चल रही थी, तो इसमें हमें ज्यादातर अपने जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहां के सिस्टम को अपडेट हमारे तरफ से एक निष्कर्ष था, और ये हमारी तरफ से बात रही। और बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये अवसर देने के लिए। अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये लास्ट जो स्पीकर हैं वो है यहाँ पर राहुल वानखेड़े। ऑनलाइन मोड में इनको बोलना था लेकिन इसमें कटा हुआ है, वो नहीं आए। अच्छा कल आएंगे। तो सारे प्रेजेंटेशंस हो चुके हैं। वंस अगेन on behalf of the organizing committee of this seminar, I thank the speakers, Dr. Daz, Dr. Engineer Harsh Kumar, Anjali Dikshit, Sarika Srivastava, and Akhilesh Mishra for the nice deliberations. And at the end, I am very much thankful to the organizer for giving me this opportunity to chair this technical session. Thank you very much. स्पेशल कमेंट ये है कि मैंने सवेरे अपने की नोट स्पीकर को सुना और उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से हमारे सामने रिस्ट्रिक्शन रखता कि हमें इन चीजों को अपने को ट्रांसपेरेंट नहीं बनाना है, जबकि हम जो शायद हम बहुत सारे लोग सहमत होंगे कि हम लोगों को एक शिक्षा अपने गुरुजनों से ये भी दी जाती है कि हम पारदर्शी बने। और दूसरा, अभी जो हमारे बहुत सारे वक्ता लोग बोले, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के जा रहा हूं। अगर मुझे कल मौका मिलेगा, आई थिंक देन आई कैन समराइज ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ होमवर्क एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट। क्योंकि ये केवल बैठने से, अटेंड करने से नहीं, हम लोगों को बहुत सारा होमवर्क अभी मिल गया है एंड वी हैव टू कीप अवरसेल्फ बिजी विद वन विंडो ओपन एंड देन ओनली आई थिंक वी कैन लर्न ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। सर, हमारे मध्य में एक दिव्यांग स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है। अगर आपकी अनुमति हो तो उनका भी प्रेजेंटेशन करा दीजिए। सर, एनपी तिवारी सर। सम्माननीय मंचासीन विशेषज्ञ कॉलेज समिति स्कॉलर, आपके समक्ष कॉलेज द्वारा जो भी एक टाइटल दिया जाता है, भाव बनते चले जाते हैं। इस बार भी मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारतीय दिव्यांगजनों के जीवन में साइबर और सूचना प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है कि इस समीक्षा पर एक विचार मैंने जो है बनाया है। आपकी अनुमति चाहेंगे सर।
सर, मेरा नाम सुभाष, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा सर। साइबर अटैक्स बहुत सुने और नेगेटिव भी रहा और पॉजिटिव भी रहा बहुत कुछ। मैं पॉजिटिव पक्ष यहाँ रखना चाहूँगा। दिव्यांग को एक लोकल जो पैथेटिक साइबर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था, और तो समाज उसके बारे में जो भी भावनाएं बनाता था व्यवहार से या कुछ वक्तव्य रखता था, तो उसका स्वाभाविक गुण विकसित नहीं हो पाता था। लेकिन साइबर और सूचना तकनीक के इस क्रांति ने उसको वर्ल्ड लेवल का विजन दिया है। तो वो अब किसी की बातों से प्रभावित नहीं होता, वो वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेट के माध्यम से जुड़ गया है और अपने अनुसंधान कार्य, प्रतिदिन की दिनचर्या, चाहे वो अनुसंधान का कार्य है, शिक्षा का है, जहाँ भी वो सेवाएं देता है, अपनी सर्विसेज का अपना बैठ देता है, चाहे वो ई कॉमर्स की बात है, ई बैंकिंग है या ई बुकिंग है, वो बेहतरीन तरीके से कार्य करने लगा है। उसने समझ लिया है कि मेरा सबसे सरल और सबसे अच्छा जो साथ है वो इंटरनेट और तकनीक का ये युग है मेरा। नॉलेज के मामले में हो, चाहे समायोजन के मामले में हो, चाहे अर्थतंत्र को इधर से उधर ट्रांसफर करना हो, मैं अब किसी के भरोसे नहीं हूँ। मुझे एक साथी विश्व स्तर का मिल गया है। तो इसी प्रकार वह अपने कार्य को रखते हुए अपनी जगह बना पा रहा है। अनेक ग्रुप बना के साइबर अपराधों से वो अपने आप को बचा भी पा रहा है, और उन्हीं में से बहुत से दिव्यांग, विशेषकर जो टोटली ब्लाइंड है, वो एक चारुदत्त जाधव मुंबई से, एपीजे अब्दुल कलाम महामहिम राष्ट्रपति, उनकी टीम में एक इंजीनियर के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो अपने रोजगार के अवसर भी तलाश पा रहा है। अपनी प्रतिभाओं से वो एक तरीके से अपना स्वावलंबन का परिचय भी दे पा रहा है। तो इसी दिशा में मैंने यही कहना है कि साइबर और सूचना तकनीक ने दिव्यांग को वास्तव में एक दिव्य अवसर प्रदान करने का ही काम किया है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जज्बे को सलाम और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आप इसी तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस द्विदिवसीय सेमिनार के दूसरे तकनीकी सत्र के समापन की घोषणा करने की अनुमति चाहता हूं। तो आज जो तकनीकी सत्र है वो समाप्त हो चुका है और कल जो हमारा तीसरा और चतुर्थ सेशन होगा उसकी शुरुआत कल 10 बजे से होगी। लेकिन जैसा कि आप सब आपको जानकारी है कि महाविद्यालय में प्रातः 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक के जलपान की व्यवस्था की गई है। तो आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। धन्यवाद। हाँ, और यहाँ पर अभी सभागार के पास में हाई टी का इंतजाम है। समाप्त द्विदिवसीय सेमिनार है, तो जब कल समापन सत्र होगा तो उस समापन सत्र के अंत में राष्ट्रगान का प्रोग्राम रखा गया है। और लेकिन फिर भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर का मोमेंटम वगैरह कहाँ रखा हुआ है? सुराम
कैसा बोलते हैं आप? पता है रिकॉर्डिंग चालू है। क्योंकि हमने तुमसे कुछ आवाज आ रही, तुम करो आवाज आ रही है क्या? तुम्हें क्या कहना चाहिए सर, आ रही या फिर नहीं आ रही? दो चीजों
साइन हो चुके हैं। आप लिख दीजिए, मैं कराता हूँ, आप ये करिए। सर का भी बनवाइए क्या? हेलो माइक चेक। हाँ, आवाज आ रही है आपकी यहाँ पे। आवाज आ रही है आपकी अच्छे से। जी जी, आपकी हाँ, आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। अच्छा। अरे वही हमने कहा कि इशू है, उनके वहाँ पे ऑडियो का है। हमारे आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये इशू है। हमने क्या कहा कि इशू उनके यहाँ से है, यहाँ से कहीं से नहीं है। यहाँ से सब कुछ ओके है, जो भी कनेक्ट हो रहा है ना, उनके में ऑप्शन आता है ना, जब आप उससे कनेक्ट करेंगे तो ऑप्शन तो आपको जब तक ओके नहीं कर ऑडियो वहाँ की आएगी ही नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए। अब वो हम तो जाएंगे नहीं उनके यहाँ तक बताने, क्योंकि आप चाहे यहाँ से अटैच है या अमेरिका से अटैच है, अटैच तो अटैच ही है ना। यहाँ से ओके, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वाईफाई चला दे रहा। लगा दिया है। ठीक है पंकज जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। कहाँ जा रहे हो? रुको अभी। याद कर रहे हैं। अरे भाई थोड़ा
देखेंगे। अच्छा उधर चले जाए। अभी फिर क्या तुम रुकोगे कहाँ? राज के साथ? गेस्ट हाउस? क्या आंसर? फोटो स्विच ऑन है, अब क्या काम होता है? कुछ नहीं किस पेन से करेंगे साइंस? अगर आज कब खाली होंगे भाई? अरे चलेंगे वो राज आज दिखा नहीं।
थोड़ा टहलेंगे क्योंकि टहलने का मौका मिला नहीं कॉलेज में अभी थोड़ा सर के पास चलेंगे पैकअप हो गया निकलना है पंकज भैया सुनिए रोहित रोहित